Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Retail inflation inches up to 5.03% in the month of February. IIP contracts by 1.6% for January this year. Benchmark domestic stocks fall around 1%. Sensex declines below 51,000 mark. Rupee appreciates by 12 paise against the US dollar. And Brent crude slips below $70 per barrel amid supply constraints. फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 5.03% पर पहुंची। इस वर्ष जनवरी में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 1.6% की गिरावट में रहा। प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 1% गिरे। सेंसेक्स 51,000 के स्तर से नीचे आ गया। रुपया डॉलर के मुकाबले 12 पैसे की मजबूती में रहा और आपूर्ति में नियंत्रण के बीच ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $70 प्रति बैरल के नीचे आया। इससे पहले कि हम खबरों का सिलसिला शुरू करें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन का। पुनीत, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनू। And let's begin the program now with the top story on inflation and IIP. Retail inflation, the consumer price index, inched up to 5.03% in the month of February. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation, the data released today, inflation increased mainly a rise in food and fuel prices. Food inflation rose by 3.87% in February compared to 1.89% in the previous month. Inflation fell to 4.06% in January, the lowest since October 2019. On the other hand, the country's factory output for the month of January contracted by 1.6%. IIP contracted after registering a 1% growth in December 2020. Puneet, we have macroeconomic data coming in. We were talking in Money Matters about how the stock market may be affected by what's going on in the background in the macroeconomics of the economy. But with the retail inflation now going up by 5.03%, what is the likely impact on interest rates, on policy making in terms of what the RBI decides should be the repo rate, the reverse repo rate, the CRR and so on? Certainly, of course, inflation has been one of the main worries in this market because, like I said, that most other economic indicators are very favorable. However, the only concern that many economists have is about inflation because high and rising demand could, in fact, inflation could push up inflation. However, if you look at the data that we have got today, it's about 5% inflation, which is well within the tolerance range of RBI. Because RBI has a target of 4% plus minus 2%. That is, they can tolerate inflation rate at up to 6%, provided it is supportive of growth. So I think as of now, if you look at the 5% inflation rate, it is well within the tolerance limit, but we need to be cautious that inflation doesn't go up. And within the inflation matrix, if you see, it is the food inflation which is usually very volatile. No, it goes up and goes down very fast. Food inflation and fuel inflation, which are contributing the maximum to retail inflation. So I think we need to be watchful about inflation, but I don't think it is time to get extremely worried about it right now. Let's wait and watch. पुनीत,
जो आप कह रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, फूड इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है, फ्यूल प्राइसेस ज्यादा हैं, ये कमोडिटीज के प्राइसेस कई कमोडिटीज के मल्टी ईयर हाइज पे हैं, और ये सारी जो चीजें हैं ये इंटरनेशनल लेवल पर भी हैं, और इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्फ्लेशन, जैसे हम यूएस में देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन को एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था। अभी 1-2 दिन पहले कुछ वहां पे कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनसे कुछ राहत मिली है। तो आपको लगता है कि इन्फ्लेशन ऐसी स्थिति में जब इतनी सारी लिक्विडिटी डाली जाती है इकोनॉमी को एक क्राइसिस में सपोर्ट करने के लिए, वो एक यू कैन से कोलैटरल डैमेज रहता है? बिल्कुल। सोनू, देखिए, इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ ये एक दूसरे के एक साथी भी है और एक दूसरे के दुश्मन भी है। जब भी हमने देखा है कि ग्रोथ आती है और ग्रोथ ज्यादा आती है, वो के साथ इन्फ्लेशन को लेकर आती है, क्योंकि ग्रोथ का मतलब है ज्यादा डिमांड, और ज्यादा डिमांड का मतलब है कि जो प्राइसेस हैं चीजों की वो बढ़ती हैं। तो जब भी हम ग्रोथ, और क्योंकि पेंडेमिक के बाद जब भी इकोनॉमी रीओपन होने लगी, तो जितने भी विश्व भर की जितनी सेंट्रल बैंक्स हैं, जितनी गवर्नमेंट्स हैं, उनका जो मुख्य लक्ष्य रहा है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को वापस लाना रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों की कमाई होंगी और जो जीवन जीने में उनको सहायता मिलेगी। लेकिन वो जो ग्रोथ आनी शुरू होती है तो देश का खतरा साथ लेकर आती है। तो हम यहाँ भी हम वही देख रहे हैं कि जो डिमांड है कमोडिटीज की, चाहे वो हम फूड और फ्यूल, तो इमीडिएट एक रिक्वायरमेंट हम देख रहे हैं जहाँ पर इन्फ्लेशन आ रहा है। लेकिन कमोडिटीज में चाहे कॉपर हो, चाहे स्टील हो, चाहे सीमेंट हो, सभी कमोडिटीज में हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। तो एक बहुत ही टाइट रोप वॉक मैं कहूंगा सेंट्रल बैंक्स के लिए है, सरकार के लिए है, कि उनको ग्रोथ को भी बरकरार रखना है, ग्रोथ को भी कायम रखना है, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन पर एक निगाह रखनी है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि हमें अभी इन्फ्लेशन को लेकर बहुत चिंतित नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसके लिए विजिलेंट यानी सजग रहना चाहिए कि इन्फ्लेशन यदि बढ़ता है तो फिर कुछ इफेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे। जो इन्फ्लेशन का मेन जो रिस्क आएगा वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर हम फेस करेंगे। हमें ग्रोथ की तरफ मुख्य इकोनॉमिक ग्रोथ है, और जब ग्रोथ शुरू तब शायद इन्फ्लेशन की ओर आरबीआई को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पुनीत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप स्पीकर के अगर थोड़ा पास आ जाएं, क्योंकि आपकी आवाज बीच बीच में थोड़ी अस्पष्ट हो जाती है। जरूर। Puneet, you are talking about growth clearly for both the CPI data that's come in for the month of February and the IIP data for the month of January, which is contracted by 1.6%. The common theme is productivity, and is productivity affected in the factory level because of higher prices of commodities? Are there supply disruptions when it comes to rise in food prices? Is it because of the farmers' protest? What are the reasons behind the lack or the fall in productivity? So productivity lately has been affected mostly by disruption in supply chains. I don't think it is because of labor shortages or because of any other, mostly other reasons, but I think higher commodity prices which require more working capital, and at the same time disruptions in supply chains. They have been kind of, some kind of a restriction on ability of companies to manufacture more as they reopen. Of course, I think going forward as demand goes up and inventory levels are built, these problems will go away. But I think right now productivity is, you're right, I mean, it's a challenge because of the various disruptions which have been caused. But I'm hoping that with economy reopening and things coming back to normalcy somehow, productivity will gain. पुनीत, आपको लगता है कि स्विफ्ट इम्प्लीमेंटेशन जो है गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की, पॉलिसीज की, जो एक हम देख भी रहे हैं कि जो भी अनाउंसमेंट्स हुई बजट में उन पर बातचीत चल रही है और कोशिश हो रही है कि 1 अप्रैल से शुरू हो जाए क्रियान्वयन। सो आपको लगता है ये जो प्राइवेटाइजेशन है या एसेट मोनेटाइजेशन है या इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पुश है, जो उसकी स्पीड बढ़ाने की, चाहे वो रोड बिल्डिंग हो, उसकी स्पीड बढ़ाने की जो बात हो रही है, या प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को जो पुश दिया जा रहा है, इन सब ये सारी जो हमारे पास जो आर्सेनल है, सभी पे हमें तेजी से फायर करने की जरूरत है ताकि मैन्युफैक्चरिंग और आईआईपी और इकोनॉमिक ग्रोथ की डायरेक्शन में मोमेंटम बना रहे।
सुन, बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं आपको ये कहूंगा, और बड़ी ये बात थोड़ी ज्यादा एग्रेसिव लगेगी, पर मुझे लगता है जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ रिफॉर्म्स हैं, जो पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस्ड हैं, वो मुझे लगता है कि गेम चेंजर है इंडियन इकोनॉमी के लिए। और आने वाले 10 से 15 वर्षों में हम इसका असर देखेंगे। और बड़े फेमस एक इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका कहना यह है कि, ऑल्दो अगेन जब मैं कहता हूं तो बड़ा एक शायद सुनने वालों को अजीब सी बात लगेगी, एक बहुत फेमस इन्वेस्टर, उन्होंने कहा कि उनकी मान्यता में आने वाले 20 से 25 वर्षों में भारत चाइना चैलेंज करेगा इन इकोनॉमिक साइज। इट विल कैच अप विद चाइना। और ये जो रिफॉर्म्स हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर क्षेत्र में, या लेबर रिफॉर्म्स की बात करें हम, ये बहुत मुश्किल रिफॉर्म्स हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं। और उन जो रिफॉर्म्स हैं उनका असर असली में तो आज देखिए 5 से 7 वर्षों में आएगा, लेकिन इसका मैं आपको कुछ सिग्नल्स हैं, जैसे जीएसटी कलेक्शंस हैं, वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई, जबकि इकोनॉमी अभी पुराने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंची है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो एक न्यू रिकॉर्ड हाई पर है। तो ये क्लियरली दर्शा रहा है कि जो इकोनॉमी में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और उसका आने वाले जो 5-6 वर्ष या 10 वर्ष में जो असर आएगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा। Puneet, we are talking about supply chain disruption as a factor which is giving rise to higher inflation. But within the tolerance range, as you mentioned earlier, transportation and logistics is a very important cost factor when it comes to computing pricing. Do you see the rise in fuel prices, retail price of fuel, as a factor which is increasing inflation? Do you see the GST bringing retail fuel within that ambit as a way of combating inflation? Absolutely, Arjun. So, fuel for India, because we import 85-90% of our fuel requirements. So clearly, importing very high cost fuel is a huge challenge for India, and it causes a lot of financial strain, not only on the government finances, it causes a lot of strain on retail consumers. So clearly, and it is really unfortunate, because I think oil producing countries are being really short-sighted in pushing prices higher, because eventually the demand for fuels will go down. But for the time being, they are doing it, that they are pursuing that policy. And yes, government, it is kind of dragging down our growth potential. So one of the ways of tackling this is to bring fuel cost within the GST ambit. However, again, when we bring it into GST, there will be a certain complication, because states lose their ability to tax fuel. And states have a very large tax inflow from when they impose VAT on fuel, on petrol and diesel. So it's not that easy. I think the states will have a lot of challenges in bringing petrol and diesel under GST. And of course, to companies it will be a benefit, because they can then take the tax input on these fuels. But so it's more of a tax juggle than really bringing down the cost to the country. I think going forward, I hope that fuel prices, the crude prices themselves will come down within the reasonable rate which they deserve. And पुनीत, जो पुश दे रहे हैं, सरकार जो दे रही है इकोनॉमिक ग्रोथ को, उसको देखते हुए आपको लगता है कि हम आशा कर सकते हैं कि आईआईपी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाएगा आने वाले महीनों में जल्दी ही? सुनो, मुझे कोई इसमें शक नहीं है कि आने वाले समय में हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में अच्छी ग्रोथ देखेंगे। और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, उसके अंदर माइनिंग को भी लेते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी को भी लेते हैं, काफी दूसरी सेक्टर्स को लेते हैं। विद इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो हमारा इंडिया में हमेशा वीक रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ कम रही है, वो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत मजबूत होगा, और मैन्युफैक्चरिंग में हम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखेंगे। पर देखिए, आज अगर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, फैक्ट्रीज लगना शुरू करती हैं, उसमें करीब 2 से 3 वर्ष लगते हैं। तो मुझे लगता है कि जो रियल लॉन्ग टर्म ड्यूरेबल इम्पैक्ट हम देखेंगे वो 2 या 3 वर्ष के बाद देखेंगे। आइए देखते हैं शेयर बाजारों में कैसा रुख रहा। मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक लगभग 1% की गिरावट में रहे। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 51,000 के स्तर से नीचे आ गया। 0.95% की गिरावट से 487 अंक कम होकर सेंसेक्स 50,792 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.95% की मंदी से 144 अंक कम होकर 15,031 पर बंद हुआ।
विस्तारित बाजार में भी गिरावट का रुख था, हालांकि यहां गिरावट सेंसेक्स के मुकाबले कम थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.45% के नुकसान में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.14% की मामूली गिरावट दर्ज हुई। Benchmark domestic stocks today fell around 1% amid mixed global cues. BSE Sensex slid below 51,000 mark. Sensex declined by 487 points or 0.95% to finish at 50,792. The NSE Nifty also lost 144 points or 0.95% to close at 15,031. The broader market at the BSE outperformed the Sensex as the BSE mid-cap index slipped 0.45%, while the BSE small-cap index appreciated marginally by 0.14%. In the Sensex pack, shares of 4 companies gained while 26 logged losses. Power Grid was the top gainer as it climbed 2.3%, followed by Titan, which surged 0.8%. ONGC and Infosys both gained more than 0.5%. On the other hand, Bajaj Auto lost the most as it slipped by 3.1%. Maruti declined by 2.4% and ICICI fell 2.1%. Sun Pharma and Reliance both ended 2% down. In sectoral indices, 15 out of 19 sectors logged losses. Utility sector stocks were the top gainer as they added 1.3%, followed by power, which added 0.7%. On the other hand, auto sector stocks declined 1.6%, shares of energy sector fell 1.4%, while BankX and finance slipped more than 1%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,301 companies gained, while 1,714 fell. Shares of 170 companies remained unchanged. Puneet, even in afternoon program, we spoke about how the market is correcting and there is profit booking going on right now. How important is a calendar effect with the financial year coming to an end when it comes to the buying interest in the stock market? And more importantly, in the stock market right now, there seems to be an interest in those companies which manufacture capital goods or your capex expenditure of companies directed towards these purchases. So, Ashwin, you have nicely put the calendar effect of the market, because I also believe that March, which is the last month of the financial year, is usually a month when we see a lot of pressure, selling pressure from people who are booking profits. And I think throughout this month of March, we see that markets, they tend to open higher, but then during the day, they kind of decline, and towards close, this profit booking and indices come down. I think markets will continue to be somewhat under pressure for the next couple of weeks until the closing of this financial year, because we have seen a lot of selling by FIIs also. FIIs otherwise have been buyers in Indian equities for last many months, but we see some kind of selling, not very heavy selling, but some little bit of selling by FIIs. And domestic investors continue to be sellers as far as mutual funds are concerned. So clearly, I think this is kind of a seasonal trend in the markets. My belief is that the markets going forward continue to be strong, driven by strong liquidity and good economic news. However, there will be bouts of profit booking, which we are witnessing right now. Also, if you see the volatility index, the VIX, that has been going up and down a lot, which shows uncertainty on minds of investors. They're not sure whether they want to commit fresh capital at these record high levels. So I think this consolidation will continue for some time. And then my guess is that markets will trend higher in April and May next year, next financial year. Puneet, अगर हम ये जो आज मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स आई हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आईआईपी की, वो मार्केट्स बंद होने के बाद आई, इनफैक्ट कुछ ही देर पहले ये रिलीज हुई हैं, आप क्या लगता है ये कैसे अफेक्ट करेंगी बाजारों को? सुनो, देखिए, दोनों फिगर्स ही करीब उम्मीद के पास हैं, बिकॉज जो इकोनॉमिक्स का अपना अंदाजा था वो इन्फ्लेशन दे वर एक्सपेक्टिंग एट 5%, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हालांकि थोड़ा उम्मीद से थोड़ी कम है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर्स, पर ठीक है, वो एक टॉलरेंस, मैं कहूंगा टॉलरेंस बैंड के अंदर है। तो मुझे लगता है कि इसका कोई बहुत असर स्टॉक मार्केट पे इमीडिएटली नहीं पड़ेगा। फिलहाल तो जो इन्वेस्टर्स की बाइंग और सेलिंग है या फॉरेन इन्वेस्टर्स की जो बाइंग और सेलिंग है वो मार्केट को ज्यादा ट्रेंड करेंगी। यूएसए में हम जो ट्रेंड देखेंगे और जो ग्लोबल ट्रेंड होगा उसका ज्यादा असर होगा भारतीय बाजारों पे। इन फिगर्स का मुझे लगता है बहुत असर नहीं होगा। Puneet, we saw bellwether stocks like Infosys and ONGC go up in today's trade, and you mentioned about VIX, the volatility index. In any portfolio, clearly there are stocks which are more volatile than the others. You have beta stocks. What's the covariance? What is the relationship here? How are institutional investors buying into the market right now? We are talking about shares that they held and they've sold,
But what is their formula right now for buying? So most of the institutional investors, one of course is that they're trying to book some profits at the end of the year. We have seen a fantastic rally in technology stocks throughout this year, and therefore you see in Nasdaq also, then some certain stocks have gone way beyond the fair valuation, and there's a very heavy profit booking there. Similarly, in India, we see that although Indian IT companies are very different from what we see in USA, because US is mostly product companies, India is mostly IT services companies. But in India also, we've seen some profit booking by certain quarters. Of course, IT companies have very strong balance sheets and they have very, very strong visibility of earnings. So their earnings are not volatile or their valuations are not volatile. So my own sense is that right now investors want to book profits where valuations have gone up a lot and they want to go into value-based stocks. Value-based stocks are where markets may not have risen a lot, but they continue to pay good dividends and they have good book value, etc., attractive valuations. So right now the trade is to sell the momentum stocks and to recirculate that money into value stocks for future growth. आप थोड़ा सा अगर सेक्टोरली हमें बता पाएं कि मोमेंटम स्टॉक्स वाले सेक्टर्स जिनमें ज्यादातर मोमेंटम स्टॉक्स हैं कौन से सेक्टर्स हैं और वैल्यू बेस्ड जिनकी तरफ आप कह रहे हैं कि अभी आकर्षित हो रहे हैं इन्वेस्टर्स वो कौन से मेजर सेक्टर्स होंगे? देखिए मोमेंटम में जो खास तौर से हमने देखा है तो एक आईटी स्टॉक्स में काफी मोमेंटम रहा है, ऑटोमोबाइल्स, मेटल्स, कमोडिटी बेस्ड स्टॉक्स में बहुत मोमेंटम रहा पीछे और वहां पर हमने बहुत तेजी देखी है, तो वहां हम कुछ हद तक या वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो एफएमसीजी जो मल्टीनेशनल कंपनीज के स्टॉक्स हैं वहां पर कम बाइंग रही है, इनफैक्ट वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उस मार्केट में, और टू सम एक्सटेंट रियल एस्टेट स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया था लेकिन वहां काफी बाइंग देख रहे हैं हम। तो ये इस तरह के जो शेयर है वहां पर हम कुछ बाइंग देख रहे हैं। और फाइनेंशियल सेक्टर में अगर आप देखें तो जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है जो वो अंडर परफॉर्म करती रही है वहां भी हम अब वैल्यू बेस्ड बाइंग देख रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो मोमेंटम से पैसा निकलकर एमएनसी स्टॉक्स और एफएमसीजी, पीएसयू बैंक्स, ये जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर हम फ्रेश बाइंग देख रहे हैं। Puneet, we are seeing the futures market a long build-up for Tata group of companies. So what's happening right now with the Tata group? Why is there a buying interest there? So interestingly, in this entire rebound of the markets that we've seen from the bottoms, one of those group of companies which has really performed well is Tata Group. Largely, I think because people have a lot of faith in that group as management, and that is why the valuations that they've demanded are doing better. Some of the top companies in the group have also done very well. So they're leading the market charge. Right now, investors have, I think they've put a lot of faith in their companies. And if you look at the Indian landscape, Tata Group companies have done extremely well in this bull run. एक आखिरी प्रश्न, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में जो इन्वेस्टर्स करते हैं नियमित रूप से निवेश, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होगी? क्योंकि ऑफ लेट हम खबरों में आ रहा है कि एसआईपी से काफी लोग विड्रॉ कर रहे हैं, तो अभी क्या सही समय है प्रॉफिट बुक करने का या एसआईपी में बने रहना चाहिए? सोनू, मुझे लगता है कि एसआईपी में बने रहना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है कि बिकॉज पीक वैल्यूएशन और एक स्टॉक मार्केट एक नए जब ऊंचाइयों को छूती है तो ऐसा लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि प्रॉफिट है, आगे का अनसर्टेनिटी होती है। पर मुझे लगता है कि अभी भारतीय बाजारों में और स्टॉक मार्केट्स में अभी कुछ और तेजी बाकी है। शायद नेक्स्ट 6 months और 1 year अभी हम और यहाँ से अच्छी तेजी देख सकते हैं। तो जो लोग काफी इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं कई वर्षों से, आई थिंक दे शुड स्टे इन्वेस्टेड और आने वाले टाइम में उन्हें और अच्छा एक रिटर्न मिल सकती है। तो आई वुड एडवाइज इन्वेस्टर्स टू स्टे इन्वेस्टेड इन एसआईपी और कोई बहुत बड़ा पैसा न डालें, लेकिन एसआईपी में जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जारी रखें और अभी मार्केट से एग्जिट ना करें। ये मेरी अपनी राय है। Well, let's have a look at the currency market now. The rupee today rose by 12 paise to 72 rupees and 79 paise against the US dollar. The dollar index, which indicates the US dollar's strength against a basket of 6 other leading currencies, also strengthened by 0.54% to 91.91 in intraday trade. Very briefly, Puneet, your take on the rupee rising against the dollar vis-a-vis what's happening in the precious metals market, where we're seeing covariance both in the silver and gold pricing. So a lot of emerging market currencies, in fact, they kind of first appreciated very sharply against the dollar and then they fell because the dollar index has gone back to about 92. Fortunately, rupee has been relatively more stable. We have seen rupee move in a very narrow range and it has not fluctuated a lot largely because of RBI's strong management of reserves. So I think, again, like I have said earlier many times,
that rupee, I think, will remain stable in a very narrow range of about 73 to 74, 75. And that may be the situation for many years because RBI has very big reserves. We have $600 billion of reserves. So I don't see any concerns about rupee stability. And rupee should remain stable, plus minus a few percentage points at the current levels. आइए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। मुनाफा वसूली के बीच और वॉल स्ट्रीट से कल रात मिले संकेतों के चलते एशियाई शेयर बाजारों में आज रुख मिला जुला रहा। बॉन्ड यील्ड में अतिरिक्त गिरावट आने से मुद्रास्फीति में वृद्धि को लेकर चिंताएं कम हो गईं। हालांकि ये निवेशकों की जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में विफल रहीं। जापान का निक्केई सूचकांक 1.7% की वृद्धि में रहा। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.4% बढ़कर बंद हुआ और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.5% की बढ़त में रहा। लेकिन हांगकांग का हैंगसेंग 2.2% लुढ़क गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 0.4% की मंदी दर्ज हुई। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में ताजा समाचार मिलने तक यहां मंदी का रुख था। लंदन के फुटसी में 0.3% की गिरावट थी। फ्रांस का कैक 0.2% के मामूली नुकसान पर था और जर्मनी का डैक्स 0.8% की गिरावट पर था। Moving on to the U.S. stock market, the three major U.S. stock indices closed with gains yesterday as worries about rising inflation subsided. Bigger than expected fall in the weekly jobless claims and the signing of a massive stimulus bill also boosted investor sentiment. The Dow Jones Industrial Average added 0.6%, the S&P 500 climbed 1%, and the Nasdaq Composite Index surged 2.5%. Dow and the S&P 500 closed at all-time highs. So, Puneet, very briefly, what should one expect from the Federal Reserve policy meeting next week? So I think Federal Reserve will maintain its present stance for the time being. The next big move from Federal Reserve could come somewhere in June, because that is when they might look at the quantitative easing program where they're pumping in so much money into the economy. But my own guess is that next 2-3 months, I do not expect any change from Federal Reserve until the stimulus package is done and the U.S. economy comes back to some kind of a growth path. पूरी संक्षेप में जो $1.9 ट्रिलियन का स्टिमुलस को जो मंजूरी मिल गई है फाइनली, वो आपको कितना बड़ा एक पॉजिटिव फैक्टर लगता है बाजारों के लिए? देखिए, वो बहुत पॉजिटिव फैक्टर है बिकॉज ये रियल मनी है जो बाजारों में जाएगी। इसमें से काफी पैसा तो अमेरिका में खर्च होगा, लेकिन वहां से जो डिमांड जनरेट होगी वो विश्व की सारी इकोनॉमीज को एक लेग अप देगी। तो मुझे लगता है ये काफी बड़ा स्टिमुलस है और इसका रियल इम्पैक्ट आने वाले 1 या 2 महीनों में जब वो एक्चुअल मनी विल फ्लो इनटू मार्केट, तब हम उसका इम्पैक्ट देखेंगे इकोनॉमी पर। Let's have a look at the oil market now. Brent crude prices today fell but hovered near $70 a barrel as production cuts by major oil producers constrained supply. Optimism about a recovery in demand in the second half of the year also checked the fall. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $69.60 per barrel, while WTI crude prices were around $65.90 per barrel. What's the upside in terms of pricing that we're likely to see and get ready for? Do the provisioning in our expenditure? So clearly, fuel prices continue to be a puzzle to me because the fundamentals of oil are such that the prices should go down, but technical in the sense that demand supply is being managed in a manner that they're supporting the prices higher. But again, I say any artificial propping up of the prices cannot sustain for long. Eventually, OPEC will have to increase production, and I'm sure prices will collapse and should fall back to some kind of economic range of $50 per barrel, which may be a short. I continue to hold that this is a short-term blip. It cannot continue for more than a few months. और आपको लगता है कि शायद यूएस को सैंक्शंस भी हटा देनी चाहिए ईरान के ऊपर से, क्योंकि उससे भी बूस्ट होगी सप्लाई? देखिए, हो सकती है, लेकिन ऑलरेडी सप्लाई बहुत है। ये तो प्रोडक्शन कट्स बहुत ज्यादा करे हुए हैं। ओपेक ने सप्लाई के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, बट दे कैन नॉट कंटिन्यू लाइक दैट। सी इवेंचुअली या तो यूएस से शेल ऑयल की सप्लाई बढ़ जाएगी या दूसरे देश सप्लाई बढ़ाएंगे, या एक आर्टिफिशियल एक प्रॉपिंग अप ऑफ द ऑयल मार्केट है, ये ज्यादा दिन चल नहीं सकती। आइए अब बढ़ते हैं सोने की ओर। वैश्विक बाजारों में मंदी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का वायदा मूल्य 490 रुपए कम होकर 44,390 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब था। मार्च अनुबंध के लिए चांदी का मूल्य भी 1,270 रुपए की गिरावट से 66,275 रुपए प्रति किलो के आसपास था। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मंदी का रुख था। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत शामिल होने के लिए। धन्यवाद सुनीत। And before we close, a reminder of the headlines. Retail inflation inches up to 5.03% in February. IIP contracts of 1.6% for January this year. Benchmark domestic stocks fall around 1%. Sensex declines below 51,000 mark.
Rupee appreciates by 12% against the US dollar, and Brent crude prices slip below $70 per barrel amid supply constraints. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.